हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट हैंड प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 29 फ्रॉम द मैगजीन स्पीडोग्राफी बाय डॉक्टर जी.डी बिस्ट वॉल्यूम 1। इससे पहले हमने सुबह इसकी डिक्टेशन करी थी। आई होप कि आपने डिक्टेशन की प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से। अब हम इसकी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। जो भी डिफिकल्ट आउटलाइंस होंगी हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे, उसके अल्टरनेटिव वेज भी सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, मिस्टर चेयरमैन सर, कॉमा, इसको बनाएंगे मिस्टर चेयरमैन सर। कंप्लीट वे में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, कोशिश करनी है इसी तरीके से लिखने की। सेपरेट वे जो है इसके लिखने की वो हमने पिछली एक्सरसाइजेज में भी सीखे हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ ऐसे स्टार्ट करेंगे, कॉमा, आई डीम इट अ प्रिविलेज, आई डीम इट अ, फ्रेंड्स ये दोनों अच्छे से बनाते हैं। आई डीम इट अ प्रिविलेज प्रिविलेज टू स्पीक ऑन दिस मोशन, टू स्पीक ऑन दिस मोशन ऑफ थैंक्स moved moved by my friend। बाय माई फ्रेंड को हम एक साथ लिखेंगे इस तरीके से, बाय माई और फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। इट इज बट नेचुरल, इट इज बट नेचुरल, कॉमा, दैट द प्रेसिडेंट, कॉमा, दैट द प्रेसिडेंट should have should have dealt at length on the very hopeful length on the very hopeful इकोनॉमिक सिचुएशन हम इकट्ठा लिखेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से, एंड द इकोनॉमिक सीन दैट इज देयर इन आवर कंट्री, फुल स्टॉप। इंडिया इज सर्टेनली, कॉमा, एज द प्रेसिडेंट put it, comma, merging from the worst period of economic crisis and is on the road to economic recovery को इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, रिकवरी, फुल स्टॉप। he has also given in his address the milestones, ये कंप्लीट वे है। आप माइलस्टोन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइल और इसके साथ ही स्टोन की हुक बना देनी है, एस्टिक हुक। ठीक है फ्रेंड्स, दैट दिस कंट्री हैज क्रॉस्ड, दैट दिस कंट्री एक ही साथ लिख लेंगे पूरा, हैज crossed in the field of agriculture, फ्रेंड एग्रीकल्चर इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम एग्रीकल्चर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमा, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉमा, एंड इन द फील्ड ऑफ imports as well as exports, full stop। The country is today exporting more and more, the country is today exporting more and more इस तरीके से बनाएंगे, and is importing, and is एक साथ लिखेंगे, importing less and less इस तरीके से, फुल स्टॉप। This is the salient
इस तरीके से, फीचर इस तरीके से, ऑफ द होल इकोनॉमी, ऑफ द होल इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री, ऑफ अवर कंट्री, कंट्री को अच्छे से बनाएंगे इस तरीके से, कंट्री, फुल स्टॉप। ए बेसिक क्वेश्चन, ए बेसिक क्वेश्चन arises how for this country, how for this country, this country को हम इस तरीके से लिखें, this country is going to get the advantage, is going to get the advantage which this economic recovery, which this economic recovery has given to us, full stop है, क्वेश्चन मार्क। इट इज नेसेसरी, इकट्ठा डालेंगे हम, इट इज नेसेसरी that we should apply, that we should apply ourselves to the basic, to the basic policies in the field of economic recovery, in the field of economic recovery and agricultural development, and agricultural development, full stop. Unless we try to devote our attention to implement the land reforms, land reforms इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, the land reforms नहीं फ्रेंड, ये land reform है सिर्फ, ठीक है, ऐसा कर लेंगे सीधा, land reform laws in agriculture, full stop. I do not think we shall be able to get, comma, we shall be able to get this gains that this economy situation है फ्रेंड्स, ये हम एक ही साथ लिख लेंगे, सिचुएशन इस तरीके से लिख लेंगे, इकोनॉमी सिचुएशन has given, full stop, पैराग्राफ चेंज। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स अब, इन द फील्ड ऑफ फूड प्रॉब्लम, in the field of food problem, comma, also a stage has come when इस तरीके से ऑन द लाइन, it is desirable for this country to adopt a national flood budget, full stop. For industrial development, it is desirable that we should lay more and more emphasis on public sector development, एक साथ लिखेंगे, development, rather than on the private sector, full stop. These questions I feel are to be solved by, these questions I feel are to be solved by our government, and that is what the president expects in his address to, full stop, paragraph change। लास्ट पैरा फ्रेंड्स जो हमारा वो है, more than all और दिस एक साथ डालेंगे, comma, what I consider as a very welcome feature
of the presidential address of the presidential address is the announcement about is the announcement about the beginning इस तरीके से of the fourth plan एक साथ ही लिख लेंगे as such full stop up till now comma we have been having plans and there was a feeling in this country that we may not have any plan at all comma that there may be a comma that there may be एक साथ लिख सकते हैं इस तरीके से a total holiday such as total holiday इस तरीके से लिखेंगे as such full stop. This feeling that there will be a plan, this feeling that there will be a plan, holiday has been removed by the very statement of the honorable president full stop close. So friends, ये था शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन एक्सरसाइज नंबर 29. आई होप कि आपको ये ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से समझ आई होगी. आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं. आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके पीडीएफ के लिए, और वहां भी आप मैसेज के बीच में मेरे को अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.